Hello friends, this is CA Rupesh, SAB registered research analyst। अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे वो पूरे तरह से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज रिस्की। कोई भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नाउ वी कम एट दिस इज निफ्टी आवरली चार्ट। व्हाट यू सॉ हियर is a triangle made between 21st April to 6th May. Nifty has broken this triangle, a breakout appeared, and then this reversed, and a failed breakout comes to an end at 23,367. Now you come at this portion. This is similar to that one, between 7th July to till date. Again a breakout, and that breakout again failed. This is called fractal nature of Nifty. And if you draw an anchored volume profile from 2nd April low, which is around 22,190, you find a black line here. It's represent point of control. Major volume big players are making position here. So today Nifty has taken this level is 23,960। आज का लो जो निफ्टी का था वो था 23,961। तो आज यहाँ पे इस लेवल को बचाने की कोशिश की गई है। अब व्हाट इफ निफ्टी ब्रेक दिस लेवल? यदि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो फॉल विल बी वेरी क्विक एंड फास्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 23,650। जो ये गैप एरिया है, शायद निफ्टी इसको फिल करे। क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बाजार में कुछ भी श्योर नहीं होता। ये एक नजरिया है जो समय के साथ ही पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। बट इट्स लुक्स लाइक हायर प्रोबेबिलिटी इज this that Nifty will fill this gap this time. So if you like this video, please like and subscribe so that I can make this kind of small videos for educational purposes. Thank you very much.